Hello, good morning. I hope my voice is clear. I mean, Yeah, it you is clear. guys Good are, morning. yeah, 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 we can start. we can start. Okay, so this session is regarding how units can register, IFSC units can register in SEZ online system and Form FA. Yeah, okay. So we'll be covering unit application and user management in this. Payment also, Any sir. query, हाँ, payment का भी. Any issues or queries or doubts regarding application filing and everything, users are I request you to kindly note out. And at the end of the session, we can have a questionnaire. Okay? Okay, yeah. And Yeah. Yeah. recording कर रहा हूँ, and so we can make it available later on. जिसको those who have missed out. Yeah. Thank you. Sure, sir. Sure. No worries. No worries. Thank you, sir. Okay. So I'm assuming there are a lot of new units in today's session. So units, this is the main homepage of SEZ Online. So users can go through the login page from this page and sorry, this is the login page and users you can see the link over here setting up a new SEZ unit. So units who want to file an SEZ online IFSC registration application, so they have to click on this link and proceed. Wait, this is a production area, so I'll just take it into the pilot area. Setting up of new unit in SEZ online. ये स्क्रीन में आपको पहला सेज ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको एक यूनिट एप्लीकेंट आईडी बनाना पड़ता है. वो यूनिट एप्लीकेंट आईडी में आपको फिर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो रहता है आईएफएससी यूनिट के लिए, तो यू फ्रॉम दैट एप्लीकेंट आईडी यू कैन क्रिएट दैट. सो टू स्टार्ट यू विल हैव टू मेक एन यूनिट एप्लीकेंट आईडी. In this screen you can see process guide note we have also attached, so unit can go through the application modules like what is the guidelines and what are the application tabs which will be coming. A detailed note is there mentioned. So SEZ unit select करके आपका applicant you just have to fill in the you just have to mention the user ID, but ये सारे points consider करके, let's say Avinash J 123 1. Password as per your choice. Again, name of your company and STL. First name, name here would be of who's the applicant. Okay. यहाँ पे यूजर को अपना फोटो अपलोड करना है. सॉरी. and then वापस से एक्चुअली पासवर्ड पेज रिफ्रेश होता है तो पासवर्ड वापस से डालना पड़ता है यहाँ पे. Once then you will have to also upload the PAN copy. And DSC serial number. सो यहाँ पे डीएससी सीरियल नंबर देना जरूरी रहता है क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे अब यूनिट एप्लीकेंट आईडी से, तो वो डीएससी से सर्टिफाई होके सबमिट होगी. सो यूजर्स हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस सिंस आई वोंट बी एबल टू डू इट योर. बट आप जब भी एप्लीकेंट आईडी करोगे तो आपको ध्यान देना है कि इस आपका डीएससी रहना चाहिए और डीएससी के सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करके और आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो सिलेक्ट करके सब ये ओटीपी डाल के declaration select करके you just have to submit the application. Okay, sorry, my phone number.
ठीक है। 67365 and submit. So here you can see आपका यूजर आईडी, नेम, रोल कैटेगरी और एप्लीकेंट के लिए आपने किया। आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एंड ओटीपी। सो गोइंग आफ्टर दैट अभी आपने अपने आपका एप्लीकेंट आईडी क्रिएट किया है। एप्लीकेंट आईडी क्रिएट करने के बाद आपको वो आईडी लेके लॉगिन करना पड़ता है, और वही आईडी से आप ये स्क्रीन दिखता है आपको, एंड देन यू विल हैव टू इनिशिएट योर एप्लीकेशन, योर यूनिट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। In this feature, in this screen also you can see inbox search। इनबॉक्स में आपने एक बार सबमिट किया रिक्वेस्ट, तो अगर आप कुछ क्वेरी रहेगा डीसी ऑफिस से तो इनबॉक्स में वापस वो रिक्वेस्ट आती है, so you can go to the inbox area and your request will be your। अगर आपको सर्च करके देखना चाहते हो कि इसका स्टेटस क्या रिक्वेस्ट का, तो यहाँ से आप सर्च करके चेक कर सकते हैं। क्रिएट एडमिन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट विल कम टू द लेटर पार्ट। फर्स्ट विल कंप्लीट द यूनिट एप्लीकेशन, मतलब कितने टैब्स आते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या डिटेल्स भरने पड़ते हैं, क्या सारा स्क्रीन में दिखा देगा। So IFSC unit. So moment you select IFSC, you will get a pop-up stating that you have selected IFSC under DC Office of Administration or IFSC, and Form FA of SEZ rules will be applicable. So going forward, you click OK. आप sorry, कंपनी कोड रैंडमली दे सकते हो। नेम ऑफ द कंपनी एंड SEZ, your unit will have to select search. If gift units can search gift SEZ name and select gift SEZ. ओके। सो इससे क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन आता है वो वही डीसी के अंडर फ्लो होएगा, दूसरे एसईजेड में नहीं जाएगा। द डीसीज व्हिच आर रजिस्टर्ड इन फॉर दैट गिफ्ट एसईजेड्स, इट विल मूव इनटू दैट इन द इनबॉक्स ओनली। कंट्री इंडिया, I'm just filling again phone numbers। आपका कंपनी का वेबसाइट आप इधर कैप्चर कर सकते हो। बैंक डिटेल्स अगेन यू कैन कैप्चर योर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स से लिमिटेड लाइबिलिटी, IFSC banking. So you get an option for IFSC if you have selected IFSC over here. You get your minor industries you can select. आप अगर capital market में हो या insurance में या banking unit हो, you can select accordingly. This section is आप जो demand draft भरते हो towards the DC registration, मतलब application का registration, not towards SEZ online, but towards the DC office. Let's say 5,000.
So as you can see, uh, this is a staging area, so आप इसका टेंशन मत लो. ये this alert is because we are in staging. प्रोडक्शन यूजर्स को ये इशू नहीं आएगा. ठीक है. तो जैसे आप ये डिटेल्स सेव करते हो तो बाकी के टैब्स ओपन अप हो जाता है. Now coming to the director detail, you will have to mention your director name and designation. Let's say he's MD. India, Maharashtra, then अगेन वेबसाइट डिटेल्स यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपका डायरेक्टर डिटेल्स अपडेट हो गए. आइटम डिटेल में आप जो आइटम में डील करते हो, सो यू कैन मेंशन योर गुड्स एंड सर्विसेज. सो आईएफएससी के लिए डिफॉल्ट सर्विसेज सेलेक्ट रहेंगे क्योंकि इनके गुड्स के रिलेटेड कुछ आएंगे नहीं. सो लेट्स से बैंकिंग सर्विसेज, एसईसी कोड. जस्ट अ मिनट. Sir, you are on mute. सॉरी माय बैड. यहाँ पे सो आई थिंक मैं इन्वेस्टमेंट टैब में था. तो यहाँ पे आपके आइटम आइटम डिटेल में आपने जैसे आपने एसएससी कोड डाल के आपने आपका आइटम कैप्चर किया. नेक्स्ट टैब है इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जो आपने आपके जो करंट यूनिट के जो इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे वो डिटेल्स आपको यहाँ पे कैप्चर करना है. ठीक है. एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट टैब इज इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे आपका ऑफिस का स्पेस कितना स्क्वायर मीटर है वो डिटेल. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच आर वर्किंग, मेल एंड फीमेल बाइफिकेशन, एवरी. ठीक है. एंड देन द इक्विटी टैब, वहाँ पे
यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल्स। अगर आपका मार्केटिंग कोलैबोरेशन है तो मार्केटिंग की डिटेल्स आप डाल सकते हो इसमें। These are mandatory fields, but if you have, you can mention these. एंड लास्ट टैब में डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो। डॉक्यूमेंट के नेम डाल के name and the subject that is for remarks if required, and then you can save and attach the documents. So ये जैसे आपने फॉर्म क्रिएट किया, जैसे आपने जनरल डिटेल्स टैब जनरेट किया, तो आपका एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होता है। सो यू यूजर्स हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस रिक्वेस्ट आईडी बिकॉज दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट इज marks as a reference for future purpose. मतलब once you submit this application, this request ID is as a reference for the DC office for you also. So this is currently how your application form looks. जैसे आपका LOA जनरेट होता है तो जो ऑथराइज फॉर्मेट है वो दिखेगा आपको। ये अभी जो हमने डिटेल्स भरे वो डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होते हैं, वो प्रिंट फॉर्मेट दिखा रहा है आपको। सो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। सो अभी यहाँ पे आप आपका स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपने न्यू एप्लीकेशन सबमिट किया है। आपको ये दिखेगा नहीं कि किसके पास सबमिटेड है, बट देन यू कैन कांटेक्ट हेल्प डेस्क और ऑन साइट ऑफिसर्स ओवर देयर एंड एनी टाइम दे कैन टेल यू दैट इट इज विद होम, इट इज पेंडिंग विद होम। यहाँ पे स्टेटस हिस्ट्री आपका एप्लीकेशन का दिखेगा कि अगर आपने डीसी ऑफिस में अगर रेज क्वेरी भी किया है तो रेज क्वेरी अपडेट होके आपके इनबॉक्स में रहेगा ये रिक्वेस्ट। ये हुआ एप्लीकेशन आप कैसे बना के सबमिट कर सकते हो। आई हैव अ रेडी एप्लीकेशंस, मतलब मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें आपका फॉर्म ऐसे कैसे दिखता है। आप उसे रजिस्ट्रेशन आपका एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका उसका प्रोसेस क्या है। लेट्स से कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट किया और उसका पूरा एलओए जनरेट होके एलओए ऑथराइज भी होगा डीसी ऑफिस से, ठीक है। नाउ कम्स the registration part with SEZ online, and then after registration with SEZ online, then you will get the option of making an admin and then your user management. So आपका एप्लीकेशन एक बार प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है, यू विल हैव टू गो टू रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट फर्स्ट। पेमेंट हैज ओके सॉरी, ये केस में पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। I'll just show this screen again in some time. ठीक है, just 2 minutes.
So registration fee payment is already done for this unit. So I'll get another detail, I'll get another ID and show it to you. In the meantime, we'll just assume that the payment has been done for this unit. This unit is already registered at SEZ online. So now the next step is to create admin. So here the user gets an option कि make me as an admin. जो applicant ID था, जो applicant ID ये केस में अभी 123 था, वो आप खुद का एप्लीकेंट आईडी आपको एडमिन कर सकते हो या एक नया क्रिएट करना चाहते हो तो उसके डिटेल्स वापस आप मेंशन करके क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट गो विद जो करंट एप्लीकेंट आईडी है उससे ही हम प्रोसीड करते हैं. You get this message and then after you have done that अभी आप देख सकते हो on the left hand side आपको एडिशनल फीचर्स है. एक रिएलोकेशन और रिक्वेस्ट है, एंटिटी डिटेल्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है. ठीक है. यूनिट और रीसेट पासवर्ड फॉर यूजर्स व्यू डिजिटली साइन फाइल्स. सो रिएलोकेशन और रिक्वेस्ट में क्या होता है कि ये पार्ट मैं बाद में बताता हूँ. ठीक है. एंटिटी डिटेल्स में आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एंटिटी डिटेल्स आपने डाले थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर होता है. आपका जीएसटी एन आईसी मेजर इंडस्ट्री माइनर इंडस्ट्री सारी डिटेल्स रजिस्टर्ड एड्रेस. नो नेक्स्ट इज टू क्रिएट यूजर्स. आपको अभी मेकर और अप्रूवर बनाना है आपको ट्रांजैक्शन फाइलिंग करने के लिए. तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाके मेंटेन यूनिट यूजर्स में जाके यू यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड देन आपने जो एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन करने के टाइम पे हमने जैसे डिटेल्स भरे थे वैसे ही आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है. यूजर का फोटो, पैन डिटेल्स, एंड यू गेट टू डिसाइड कि आपको ये यूजर को रोल क्या देना है. आप अप्रूवर यूनिट अप्रूवर दे सकते हो, यूनिट मेकर दे सकते हो. इसको यूनिट अगर आप इसको यूनिट एडमिन भी करते हो तो ये जो करंट यूजर है यूनिट एडमिन विल बी डिसेबल्ड एंड दिस यूजर अभी विल बिकम एन यूनिट एडमिन. तो यूनिट अप्रूवर क्रिएट करते हैं एंड यूनिट फंक्शनैलिटी देना है. तो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज से समझो अपने यूनिट मेकर को फंक्शनैलिटी दी है यूनिट न्यू एलईटी फाइल करने के लिए, अपडेट एलईटी फाइल करने के लिए, सॉफ्ट टेक्स्ट देने के लिए और यूनिट अप्रूवर को ये फंक्शनैलिटी नहीं दी है. ठीक है. तो यूनिट मेकर ने अगर रिक्वेस्ट बना भी दिया है तो ये यूनिट अप्रूव के आईडी में नहीं आएंगे, इनबॉक्स में नहीं आएंगे. सो वी हैव टू मेक श्योर कि अगर यूनिट मेकर को मैंने जो फंक्शनैलिटी दी है तो यही यूनिट अप्रूव को भी मिलने चाहिए फॉर द रिक्वेस्ट. क्योंकि ये मेकर चेकर कंसेप्ट है. मेकर क्रिएट करता है, यहाँ पे मेकर चेकर कंसेप्ट होता है. तो मेकर यूनिट मेकर यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट क्रिएट करते सारे एप्लीकेशंस एंड यूनिट अप्रूव को भेजता है. यूनिट अप्रूवर जस्ट वेरीफाइज द डिटेल्स एंड सबमिटेड बाय अफिक्सिंग डीएसी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट अप्रूव फर्स्ट.
तो आईएफएससी यूनिट्स के लिए रहेंगे तो डिफॉल्ट के लिए सर्विस एक्सपोर्ट्स रिपोर्टिंग फॉर्म डिफॉल्ट रहेगा। और यूनिट अप्रूवल को दे हैव टू असाइन डीएसी टू इट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो फंक्शनैलिटी जस्ट अ मिनट। मैं अभी करंटली इसको डीएससी फंक्शन अटैच नहीं कर पाऊंगा फ्रंट एंड से। जस्ट सो यहाँ पे यूनिट अप्रूवल सेव करके क्रिएट करता हूँ। डिफॉल्ट आप जब भी यूजर क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट पासवर्ड Can you एसईजेड ऑनलाइन। please, hello? Yeah. Can you please make the mute? There's so much background sound is coming. I am actually sorry, but uh, there are no meeting rooms right now, and this is currently I'm operating from a desk. Uh, I'll try to be as clear because we are just about to end, just close to the session only. So the default password I was saying key, the default password for every user that you create is SEZ online@123 S capital. Sorry, first login करना पड़ेगा। So first login आपने जो email address capture किया था वो देने पड़ेंगे and then your mobile number.
So after you do the first login, you'll have to verify the email address and your mobile number. Just a minute. Hmm. So I've verified my email address, and then I think the OTP is not right. Okay. So after the verification, you can in case users को OTP आपको नहीं आ रहा है या ईमेल पे वेरिफिकेशन ईमेल नहीं आ रहा आपको, तो आप SEZ info को आप मेल कर सकते हो एंड वी विल हैंडल इट फ्रॉम योर एंड वी विल इन्फॉर्म यू. ठीक है. Users who are not getting OTP on their mobile number or email verification, you can write an email to sezinfo@nsdl.com. ठीक है. Mentioning, you have to just mention your user ID, your email address, and your mobile number, and we will check and update you about it. ठीक है. So in this case, हमारा तो OTP verification भी हो गया और email verification भी हो गया, so we can set a new password and proceed to login. So the unit approver gets all the functions in this. Right after your registration has been completed, unit will have to first get their LO accepted. So can you see the link accept LO? Just a minute. 2 minutes. Here actually after you accept LOA, the PDF copy of your LOA is generated and shown here. So users will just have to accept it and affix it with the DAC. Uh, uh, just 2 minutes. I'll just show you another application ID where unit approval ID where LO is already accepted. I can show you the details of that, how it अच्छा looks. अविनाश जी, इसमें जो आपका हाँ. ये SEZ ऑनलाइन फैक्ट शीट है, फैक्ट शीट एंड यूएसी एप्लीकेशन, वो क्या है? हाँ. हाँ, ये एक नया फीचर हम लोगों ने लास्ट वीक ही इंट्रोड्यूस करवाया. इसमें बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डिटेल्स भरे रहेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, इक्विटी डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे चेंजेस रहते हैं. तो उसमें अगर कुछ चेंजेस रहेंगे आपके, इससे आपने नया एरिया भी लिया, तो वो एरिया कैप्चर करने के लिए आपको डिटेल्स वापस डालने पड़ते थे ना.
तो वो यूनिट फैक्ट शीट में भी और उसमें कवर्ड होता है। अगर आपका बोर्ड चेंज हो गया तो उसमें यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन एंड सबमिट इट टू डीसी ऑफिस। दिस इज फैक्ट शीट इज जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस टू द डीसी। So you have to still continue with the free form तो फाइल करना ही है अगर कोई भी एप्लीकेशन है तो। हाँ, फ्री फॉर्म के लिए तो कंटिन्यू करते हैं। वो स्टिल कंटिन्यू है ना? हाँ, वो स्टिल कंटिन्यू। आधी कुठला होता तर दे ना. ते मी बनवलंय. दुसरा कुठला आहे का युनिट अप्रूव्हर जिथे ऑलरेडी एक्सेप्टेड आहे LOA? हा, तर ते मला दे. इन द मीन टाइम मैं पेमेंट स्क्रीन बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट का स्क्रीन कैसे दिखाई देगा. So, over instead of when you're making unit applicant ID में instead of SEZ online payment जहाँ पे registration payment रहेंगे, and then you click on the payment details. Sorry. Okay, ये इसमें मेरे को validation सारे complete करने हैं. Just a minute. So after unit has completed the registration, उनका फर्स्ट वैलिडेशन क्या रहता है यूनिट को कि एक्सेप्ट करना पड़ता है उनका LOA. ठीक है. एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड वैलिडेशन जो आता है सिस्टम बताता है कि यू हैव टू update your GSTN. Those units who get their GSTN can click on this link and update it. Next validation is the lease deed, the third validation. So आपका SEZ एड्रेस मिलता है, आपको लीज डीड अग्रीमेंट होता है, तो आप लीज डीड यहाँ से भी अब यूनिट अप्रूवल के लॉगिन से आप लीज डीड फाइल करके सबमिट करना पड़ता है डीसी ऑफिस का. इनका जैसे वर्कफ्लो जैसा कंप्लीट होता है लीज डीड का, तो आपका SEZ एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. तो जैसे मैंने अभी डायरेक्टली मैं लीज डीड के लिए जंप नहीं कर सकता, तो मैं अगर मैंने LOA एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मुझे सिस्टम अलर्ट देगा कि आपको पहले आपको LOA एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड देन द थर्ड पार्ट इज फोर्थ पार्ट इज LUT फाइल करना. ये चार वैलिडेशन कंपलसरी आता है वंस रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड इन सेज ऑनलाइन. यूजर्स को कुछ क्वेरीज है तो आप बता सकते हो, मैं आई कैन आंसर इट. Hello, हाँ. I'm Nilesh Malviya from Caravela. Good morning, and thanks for this. Actually, we just wanted to Yeah. check who can create this application. Like you were, I think, to create it through admin. You were creating the application through admin, correct? Or who can create No. I'm not creating the नहीं. Before admin applicant ID ही रहता है. ठीक है. पहला एप्लीकेंट आईडी बनाता है, एप्लीकेंट आईडी से आप वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो. ठीक है. और फिर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डीसी आपको LOA ऑथराइज कर देती है, तो एक ऑप्शन आता है वो आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने के लिए SEZ ऑनलाइन में. ठीक है. एंड जैसे पेमेंट ऑथराइज होता है तो आपको एक ऑप्शन आता है कि मेक वो एप्लीकेंट आईडी आपने जो दिया वो उसको आप एज एडमिन क्रिएट कर सकते हो या एक नया एडमिन आईडी बना सकते हो. But see, ठीक है. our application was already approved physically. LOA, we have already received the LOA for the BRICS Money Market Fund. So now, as a process requirement, we have to create it online. So who can create this actually out So of? you can only create it. आपको एक एप्लीकेंट आईडी बनाना पड़ता है. जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि एप्लीकेंट आईडी पहले क्रिएट करके डिटेल्स आपके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बनाना है. And when should we make the fees payment? I mean, LOA also should be uploaded in this, or how is it? LOA is जैसे आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है ना, एक वर्कफ्लो. these requests ना once you submitted ना, so LOA DC ऑफिस will give you an LOA authorize. तो जैसे वो ऑथराइजेशन मार्क करते हैं LOA का, वो LOA जनरेट हो जाता है आपके रिक्वेस्ट में, आपके सिस्टम ये सेज ऑनलाइन में.
even though we have received physically, again the SEZ will send us LOA for that separately on to या online mode. अभी मतलब अभी आईएफएससी यूनिट्स के लिए तो ऑनलाइन ही करना है, राइट? तो सिस्टम विल अलाउ But सिस्टम। we have already received the LOA physically through email and अगर hard आपका copy. आई थिंक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाले यूनिट्स है आईएफएससी के, तो वो आई थिंक उनका मैप होएगा बाद में बैकएंड से, वो एक विद इन 1 वीक और 2 वीक्स में हम लोग आपको बता देंगे। करंटली इन टेस्टिंग फेज, अगर आप एग्जिस्टिंग वाले हो तो ठीक है। हाँ, correct. Because नए we यूनिट्स submitted the form नए यूनिट्स के लिए तो physically. नए यूनिट्स के लिए तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें आप ये एप्लीकेंट आईडी था, ठीक है। ये सॉरी, ये एप्लीकेंट आईडी पहले था, अभी उसको मैंने एडमिन आईडी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे पहला एक पेमेंट का ऑप्शन आता था, registration payment. So from that link, you can make registration payment to us, says online. Okay. So as of now, we will just create an application and wait for a week to 10 days. No, you can create an application, then वो application go to the DC office. You'll have to basically follow up with the DC office and get your application approved. Okay. Yeah. Fine. So we'll attach the LOA and also request them that this LOA is already approved. Just require approve through online. For existing के लिए मैं आपको process बता, I'll let you know in some time कि existing के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि what we are doing कि अगर आपका LOA already है तो उसमें हम backend से इनको insert करा के सिर्फ based on DC's approval हम लोग उसको map कर देंगे। Avinash ji, I would like to add. You can request the, or you can get the clarification on the IFCA. अगर सर बोलते हैं या गौतम सर या कोई नहीं भी, नहीं, तो अटैच आई कर थिंक दीजिए। प्रकाश जी हमें कल ही कुछ एक डिटेल्स मिले हैं, जो जिनके ऑलरेडी एलओए रहेंगे ना, तो ओके उनको हम लोग बैकएंड से मैप करके उनका एलओए ऑथराइज कर देंगे। तो दे जस्ट हैव ओके टू, इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो हाँ शॉर्टकट होगा, ओके बट वो Should I अभी do? फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, तो वी लेट यू नो इन वन वीक और 2 वीक्स टाइम। So should I upload it all the details now or wait for a week or 2 weeks? सर आपका That is अगर एलओए ऑलरेडी है तो यू वेट फॉर अ वीक और 2, ठीक है, लेट यू नो, वी लेट यू नो। okay. Fine. ये जो मैंने ट्रेनिंग सेशन में बताया तो वो न्यू यूजर्स के लिए, नए यूजर्स को अगर रजिस्टर करना है सेज ऑनलाइन में तो आपको कैसे करना है? नहीं पर आप रेगुलराइजेशन बोल रहे हो उनको तो फाइल करना पड़ेगा ना, एग्जिस्टिंग जो मैनुअल एलओ है उनको भी। हाँ मतलब जिनका एग्जिस्टिंग वाले जो है ना, वी आर मैनुअल एलओ जो लुकिंग, इशू है उनको ये रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना। इफ डीसी has asked them to register then they will have to, but But what I understand is the system is yet to be enabled for that. Correct? Huh? Avinash ji? प्रकाश जी हमें कल ही एक आईएफएससी से लिस्ट अच्छा, मिला so है एलओए that जो। is a new update. You should wait for the clarification हाँ from IFCA हाँ, what to do. तो So अभी फाइल नहीं करना सो है, right? यू हैव टू, हाँ अभी फिलहाल फाइल मत करो एग्जिस्टिंग के लिए, मैं बोल रहा हूँ जैसे हमें कुछ क्लैरिटी मिलेगा उस मैटर पे हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। And fees एनी payment अदर and क्वेरीज? everything will be done later on. Yeah, correct. Fees. सपोज मान लीजिए लाइव हो गया सिस्टम, हाउ टू फाइल हाँ एलयूटी। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, किसी का समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन, नहीं वो निकाल दिया उन्होंने। ओके यस सर, यस सर, वो बीएलयूटी कहाँ से फाइल करना है ऑनलाइन? ओके हाँ, तो बीएलटी आपने, जैसे मैंने अभी यूनिट अप्रूवर बनाया, राइट? एक यूनिट अप्रूवर का आईडी क्रिएट करते हैं हम लोग अभी, आई शो यू। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ जस्ट एक मिनट, इनिशियल मेकर में आएगा आई थिंक अविनाश जी, मैं मेकर में मैं से एक बार एलयूटी पहले। मैं एक बार स्क्रीन बता के बोलता हूँ, जस्ट ठीक है सो एडमिन आईडी से एक बार लॉगिन करना है। वो यूनिट मेकर को, जैसे हम लोगों ने यूनिट अप्रूवल को क्रिएट किया वैसे ही we'll have to create a unit maker ID. Just a minute. DSC is required only for approver, correct? Not for maker. Not for maker, not for maker. Correct. You're correct. Just a minute.
सो मेंटेन यूनिट यूजर्स में आप लॉग इन करके ओटीपी डालना है, एंड वी आर योर क्रिएटिंग एन यूनिट मेकर। ठीक है, हम लोगों ने यूनिट अप्रूवर ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो वी आर क्रिएटिंग यूनिट मेकर। यूनिट मेकर विल क्रिएट रिक्वेस्ट एंड विल सबमिट टू द यूनिट अप्रूवर। So unit approval just verifies the details and submits it to the DC office or customer office further. ठीक है, सेम डिटेल्स यहाँ पे जैसे हम लोग ने यूनिट अप्रूवर क्रिएट किए थे, वैसे ही हमें यूनिट मेकर के लिए करना है। तो फॉर्म ऐसे यूनिट अप्रूवल भी क्रिएट कर सकता है ना इन द व्हेन दे आर क्रिएटिंग, व्हेनेवर दे आर क्रिएटिंग। नहीं, फॉर्म एफए सर आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के टाइम पे होता है, so that हाँ comes तो before your maker ID और अप्रूवर आईडी। ठीक है, आप जब भी यूनिट एप्लीकेंट बनाते हो, ठीक है, आपने वो जो मैंने स्क्रीन्स बताए थे, टैब्स बताए थे एप्लीकेंट आईडी से, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ठीक है, वो जैसे अप्रूवल होते जाता है तो उसका तभी एक डीसी ऑफिस में प्रोसेस होता है एलओए जनरेट करने का, तो फॉर्म एफए। तो दैट ऑप्शन कम्स आफ्टर एलओए जनरेटेड, तो वो उधर ही दिखेगा आपको। बट एनीबॉडी कैन क्रिएट ना, लाइक फॉर एग्जांपल फ्यूचर में लाइक इफ आई एम द यूनिट अप्रूवर है, बट आई कैन क्रिएट इनिशियली ना द एप्लीकेशन। हाँ, जब भी आपने एप्लीकेंट आईडी बना के रखा है, वही एप्लीकेंट आईडी से जब भी आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करते हो तभी, नॉट आफ्टर, नॉट इन यूनिट मेकर और अप्रूवर। आपको कंफ्यूजन है अभी भी? Like for example, see, I will be the approver for my Caravella, okay, but I want to create the application initially. So, मतलब हाँ, at सो that time I will not सर be assigned as ये a अप्रूवर आईडी बाद में आता है सर। अप्रूवर आईडी, हाँ यूनिट अप्रूवर एंड मेकर कम्स आफ्टर योर यूनिट एप्लीकेंट आईडी। ठीक है, पहला सबसे पहले आपका यूनिट एप्लीकेंट आईडी रहता है, वहां से आपको आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बना के सबमिट करना पड़ता है डीसी ऑफिस को। ठीक है, हाँ तो और वो जैसे registration अप्रूवल, I can do that, no? But हाँ, फ्रॉम दैट एप्लीकेंट आईडी इट हैपेंस, yeah, नॉट फ्रॉम, okay, हाँ that. या। पर यहाँ पे फंक्शनैलिटीज में सब फंक्शनैलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना डेली आते हैं। जैसे आपकी मर्जी रहेगी, अगर आपको लगता है कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट और डीटीसीएल आपका एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, सो यू कैन अनसेलेक्ट दैट। बट मेरा पॉइंट क्या है दिखाने के लिए कि जो मैंने फंक्शनलिटी यूनिट अप्रूव को दी है, ठीक है, मतलब सारे फंक्शंस, तो वो सारे फंक्शन इनको भी देने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनसे रिक्वेस्ट आईडी की है तो वो रिक्वेस्ट आगे सबमिट होना चाहिए, वो यूजर के इनबॉक्स में जाना चाहिए। Okay. And we can modify this at a later date as well, correct? Yeah. You can modify. See, you can modify all the details, except I think user ID. बाकी की डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। आप ये फंक्शंस भी एडिट कर सकते हो। It is suggested we can select all options also, even though it is not applicable, correct? इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अगर ऐसा बेटर रहेगा। Correct. Yeah. Softex is, I think it will not apply to fund, no? हाँ नहीं, सॉफ्टेक्स सिर्फ एक फंक्शन है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो यहाँ पे मेकर आईडी हम लोगों ने क्रिएट किया, सो सेम जैसे प्रोसेस किया हम लोगों ने, फर्स्ट लॉगिन करना पड़ेगा।
as Prakash you were telling ना, like free form तो भरना ही पड़ेगा, even to fact sheet is there. तो but in what situations we should use fact sheet जो नया feature है? फैक्ट शीट इज रिपोर्टिंग पर्पस, सो आपको अगर रिपोर्ट करना है डीसी ऑफिस को तो आप इस पे भी रिपोर्ट कर सकते हो. इट्स बोथ द पर्पस एक्चुअली. कैन मतलब डीसी ऑफिस को रिपोर्टिंग फॉर्मेट में अगर चाहिए तो इट इज नीडेड. इफ दे आस्क फॉर यू कि एक फैक्ट शीट बना के सबमिट कर दो तो देन यू कैन क्लिक एंड सबमिट इट. Okay, so only if it is requested by DC office then we should use it, correct? Yeah. Second. सो ये यूनिट मेकर में आप देख सकते हो कि इनके पास बहुत सारे लिस्ट है और यूनिट कंपेयर टू यूनिट अप्रूव, बिकॉज यूनिट मेकर क्रिएट्स द रिक्वेस्ट एंड यूनिट अप्रूव जस्ट वेरीफाइज द डिटेल्स एंड सबमिट्स इट टू द डीसी ऑफिस. मेकर चेकर कंसेप्ट जैसे मैंने बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे आप जिनका क्वेरी था कि एलयूटी कहाँ से सबमिट करना, तो यहाँ पे आप फंक्शन देख सकते हो. अगर आपका नया यूनिट है तो न्यू एलयूटी आप कर सकते हो, और अगर आपका एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एलयूटी है तो आप अपडेट एलयूटी पे जाके क्लिक कर सकते हो. सो Okay, sir. या सो अभी आई कैन नॉट गो अहेड बिकॉज मेरे पास वैलिडेशंस करने हैं. ठीक है, एनी मोर क्वेरी सर? I hope this issue is clarified your doubts. और आपको कोई और क्वेरीज है तो बता दो. Yes, sir. Sir, दूसरी दो मेरा query थी. मैं एक मिनट मैम, हाँ बता दो. मैं मेरे चैट में मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर देता हूँ. यू कैन. हाँ बताओ आपका क्वेरी बताओ सर. जी सर. तो सर फॉर्म एफ में जो लास्ट में आता है कि डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का, तो कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है कि इतने तो कंपलसरी हमको अटैच करने ही है? जैसे मतलब ये डीसी का रिक्वायरमेंट, अगर आपको सबमिट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेगा. आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको तो अटैच करना ही पड़ेगा सर. जी सर. और एक जनरल टाइप में जो अपना करेंसी रेफरेंस रेट आया था, वो कहाँ से रेफरेंस रेट हमको कहाँ से डिराइव करने का? सर वो आपका इट्स कंपनी टू कंपनी, आप कैसे रेफरेंस लेते हो उसका तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया था. इट्स फॉर टेस्टिंग अच्छा. पर्पस. ओके. सो ये मेरा कांटेक्ट डिटेल्स में शेयर करो, तो आपके डिटेल्स रहेंगे तो आपको कुछ इश्यूज रहेंगे तो यू कैन जस्ट गेट इन टच विद मी. मैं मेरा हेल्प डेस्क टीम का भी आपको ईमेल एड्रेस देके रखता हूँ. So sezinfo@nsdl.com is our help desk. You can get in touch with them. आप उनको भी ईमेल कर सकते हो. आपके इश्यूज रहेंगे कि आपको डीएसी सीरियल नंबर अटैच करना है तो कैसे करना है, या पासवर्ड रीसेट हो रहा है, या आपका ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो दे कैन गाइड यू. ठीक है, सो हेल्प डेस्क टीम को आप ईमेल भी डाल दोगे, आपके एंटिटी के डिटेल्स भी हम मेंशन कर दोगे, तो दे विल बी एबल टू गेट इन टच विद यू एंड हेल्प यू आउट. सो किसी ने कहा है कि ई-लॉग सुपर साइनर टूल. सर आई एम नॉट एबल टू said application management system. In the previous system, things were running smoothly, but somehow the application doesn't start on. एक चैटबॉक्स में क्वेश्चन है, ही इज नॉट एबल टू इंस्टॉल ई हाँ लॉकर. सर, ये कल ही आई थिंक सो हमें किसी यूजर ने रिपोर्ट किया था, तो वी आर हाँ वही लुकिंग वही इनटू दिस. राम को हाँ स्क्रीनशॉट राइट भेजे थे राम. तो. हाँ राइट राइट राइट. मेरा टीम ऑलरेडी हम लोग चेक कर रहे हैं उसके साथ. तो जैसे कुछ अपडेट मिले हमें तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि वो क्या इशू है. ओके सर. उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं हम बता देंगे आपको. वी आर लुकिंग इनटू दिस इशू सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. Okay, fine. Any other queries? Otherwise we can end the session.